I had made in the beginning, Mr. Amir Rahman is the person who is recording the question. Learned Attorney General. जब आप देखिए हम आज से सुबह से कोई 150 केसेस की एडिशन हो गई होगी because of this case. We can hear this case for the next month. No other work will happen in the Supreme Court. If you want this system to collapse, please proceed. Take your time. We won't interrupt. ख्वाजा साहब नाराज हो कहते हैं, अब आप नाराज हो जाएंगे, मुझे बोल नहीं दे रहे हैं. पॉइंट्स ले हम नोट करेंगे, हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं. आपने इतनी मोटी चीजें दी, हम पढ़ लेंगे इनको. Now I just quickly rush through my submissions and my question that in order 11, the use of the word law or the term law, you think it carries the same meaning as in Article 191? Yes. Thank you. Now, my lord, if leaving this act out of Article 191 would render part of Article 191 redundant where it says subject to law. Right. And redundancy cannot be attributed lightly to a statute, let alone a constitutional provision. The judgments are in the paper book. My lord, there was another submission which was made with regards to field being occupied, which is to say that since the rules had been made, therefore the field stood occupied and therefore a law cannot be made. Now, that principle also does not apply because that principle is only applicable where the powers are coextensive or coterminous. Here, the Constitution specifically says that the rules shall be subject to the Constitution and the law. It can't be. So, therefore, the principle of the doctrine of occupied field does not get attracted here. Now, my lord, if I may take your lordships to the individual provisions of the statute before I conclude my submissions. Section 2, my lord. Section 2, as I've already submitted, it endeavors to create more transparency, where the power has been, which was under the rules vested in the Chief Justice, has now been... Or you can call it a sharing of the burden. Sharing of the burden. It's a huge burden. Yes. Why think of it negatively? Think of it positively. My lord, I don't want this burden. I want to share it with my colleagues. So what? Fantastic, my lord. That ends the matter as far as Section 2 is concerned. Absolutely. 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 And because what it does is... So I don't trust them. That's the only other way. No, I can't trust them. It is in this time when we 100%. want the justice system to be more efficient. It actually helps when there are more minds sitting together trying to work out how to make things more efficient and transparent in order to aid the litigants who come before your lordships. And if I may say so, the primary duty and obligation of this court is under Article 185, exercising appellate jurisdiction. 184.3 is rare cases which come before your lordships under 184.3. It is actually the appellate jurisdiction of this court which this court is duty bound to exercise. So anything and everything which advances that objective, that constitutional objective, must be supported, must be upheld. There is no fundamental right which gets offended or violated by advancing this objective. And Section 2 endeavors to do as much. So if that was the objective, the law would again be changed if at some stage the government or the parliament decides that no, 3 judges are not enough, let's do it by ballot. So you would amend the law accordingly? My lord, if I may. Or let's do it, why 3 judges, why not all 17 sitting and deciding which cases go where? My lord, if I may respond to this. Yes, sure. My lord, if the pendency goes down to 20,000, absolutely there would be no occasion. But if it goes to 75,000, there might be. Why not 10? Zero. But this is what is being sought to be addressed. You will attend to a matter on that thing. I don't think parliamentarians, we should disparage Parliament all the time. If the situation is that there is no pendency, maybe they would have not come up with this thing. Maybe if the damage caused by various judgments was not done, they would have not come up with this thing. So Parliament doesn't operate in a vacuum. It hears, the government is part of it, opposition is part of it, all these people are part of it. They think and they produce something. Maybe not in the most perfect of things, but we have to, each legislation must be supported unless it's clear-cut violation of
the ultra vires of constitution fundamental rights in 184.3. Otherwise, it can be ultra vires of constitution, you do a 199. Simple. And my lord, the power remains vested in this court. But Mr. Attorney General, suppose there is a parliament that is elected in the next general election. On your theory, would that parliament not have the power to repeal this law? Of course. Oh, you see, you are saying this is a law if it repeals it, yes. That this is a law affecting having such a salutary effect. It is having this, that and the other. So someone can say, जी पार्लियामेंट का तो पावर ही नहीं है, तो ये लॉ को रिपील कर दें. या फर्ज करें अगली पार्लियामेंट आती है, वो सेक्शन 2 को फारिग कर देती है, वो कहती है जी चीफ जस्टिस का पावर है, वो दैट्स गुड इनफ. माय लॉर्ड सकती है. आपसे पूछ रहा हूँ. जी जी. देखिए अवान साहब मैं देखें प्लीज, मैं उनको भी रोका था और मैं आपको भी रोकूंगा. मैं कंजेक्चर्स पे नहीं जाऊंगा, मैं रियलिटी पे जाऊंगा. ये कानून आ गया, अब अगली दफा कोई केस ले आएगा हम वो वाला भी देख लेंगे. मैं ओपिनियंस कभी नहीं दूंगा. आप हमारे या तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस्तेमाल कीजिए, हम ऐसे आपको ओपिनियंस नहीं देंगे. आपका काम है अपनी सरकार अपनी गवर्नमेंट को ओपिनियन देना, हमारा काम है उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी आप देखें, खत्म. हम आपके ऊपर मफरूजे नहीं डालना चाहते हैं कि क्या होगा. भाई हमें क्या पता क्या होगा, जब आएगा हम देख लेंगे बहुत सारी चीजें. आप फोकस कर लें प्लीज इस कानून पे और आगे बढ़ा लें बात को, क्योंकि हम देखिए कोर्ट आप समझ नहीं रहे हैं इसकी अहमियत. हम लोग बैठ के इधर एक कंडीशन गवर्नमेंट में बैठ रहे हैं, लोग कोई जेल में मर रहा है, किसी का केस है. मेरी तो मुझे तकलीफ हो रही है. सुबह से 57,000 है, अब हम छोड़ के जाएंगे 150 और बढ़ जाएंगे, कल 150 और बढ़. आप चला लें एक महीना केस, हमें क्या फर्क पड़ता है. फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम तनख्वाह ले रहे हैं इस गरीब अवाम से एक काम करने के लिए कि उनके केसेस का फैसला कर लें, खत्म. ये बहुत अच्छी डिबेट है, जाके हाई कोर्ट में कर लें चैलेंज, वो आ जाएगा जजमेंट हमारे 94 में, हम बड़े पूरे पावर्स के साथ बैठ के इसको देख लेंगे. आपको पता है आज बेंच बनाने का क्या इशू था, इसके बावजूद के स्टे चल रहा है. मैंने अपने 2 सीनियर कलीग से पूछा कि मैं ये करने जा रहा हूं, 2 स्टे चल रहा है. ठीक है, वो एक अलग बात है, आइन कानून पर स्टे चल रहा है. फिर भी कि बात को आगे बढ़ा के किसी खत्म कर लेना, सराह लें कानून को, ये तर्क कर दें. मगर आप अपने दलाइल दें, हम उसका सुन लेंगे और फैसला कर लेंगे. कोई इख्तलाफ करेगा, कोई नहीं करेगा, उनकी मर्जी है. हमें आपको परसुएट करने की कोई जरूरत नहीं. आप हमें परसुएट कर लीजिए, और सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, हम आपके खिलाफ कर लेंगे फैसला. My lord, my learned friend is recording the questions. No, sorry. I'm not indulging in conjectures. I'm asking you a question in order to understand the principles that you are saying and arguing and submitting before the court. My lord. I'm not engaging in theoretical argument. My lord. I'm trying to understand the basis on which you are defending the constitutionality of this law. So therefore my question stands. Tomorrow if Parliament were to make this a law and say, let it go back to the Chief Justice in his sole capacity, would that is within Parliament's competence? My lord, if that is so, if it so happens. Yes, not conjecture. This is to establish the principle. You accept that? Absolutely, my lord. Absolutely. It is in Parliament's competence. And if I may say so, my lord. My lord, I have provided assistance. I have as Attorney General. Ji, absolutely. Yes. Okay. Mr. AG, to your right. Section 2 it's provided that the bench, constitution of the bench. Suppose bench is constituted. Who will assign the cases to the benches? Still this power has not been given in this act. Again, there will be... My lord, the committee is to determine its procedure, and then it, with regards to how the meetings are to be, this committee itself. Who will assign the cases that this case will be fixed before this bench? And one thing more, if 2 members, senior members comes to the conclusion, say tomorrow the Chief Justice will sit in Quetta Registry for 1 month, for 6 months, or for 1 year. Is it possible? My lord, what will we do if this situation occurs? My lord, the committee has to, under subsection 2, after the commencement of this act, the committee had to hold its first meeting for the purposes of determining its procedure
which would have included when and how where and how the meetings were to be held and the constitution of benches, etc. But that never happened because the law was suspended, or well, the bill was suspended before it became an act, which was also, if I may say so with regret, was a first. My Lord, this is exactly what under subsection 2 the committee is to do as the first. We will regulate through rules. They will regulate this act through rules. My Lord, the committee will determine its procedure much the way the Supreme Judicial Council's procedure has also been made. It's not necessarily, I don't know what their relevance, what their status is, an SRO or it's a rule or whatever may call it, but the committee can determine its procedure. It will be a procedure of the committee for the purpose of its functioning. Now, Section 3, my Lord. Section 3 is exercise of original jurisdiction by the Supreme Court. Now, there was a question which was raised and which was asked when the petitioners were arguing that the committee is to first see whether the matter is, it has to come before the committee to examine if there is a question of public importance with reference to enforcement of fundamental rights, and if the committee thinks so, only then it will constitute a bench. And there was a question raised from the bench that would this not be an administrative power controlling a judicial function? And my response to that, my lords, is that if it is determined, it is held that it is an administrative function and it cannot be performed in a manner to control judicial powers, then my lords would surely come to the conclusion that this court will never exercise suo motu powers either, because while exercising suo motu powers, it is either previously it was the Chief Justice who would then first determine whether the matter was of public importance and relatable to enforcement of fundamental and then constitute a bench. This is this tension which my Lord had also while authoring judgment, rendering judgment. This doesn't answer the question whether the threshold of 184(3) is to be decided by the committee, as this law suggests, or whether it is the function of the court, whether it's a judicial power. That's the fundamental question, that is this not a judicial power? Because there is a threshold, you say so yourself that there's a threshold. So how can a committee be deciding it? And again, it goes to the fact that if the committee decides that this doesn't meet the threshold, then the person that has filed the petition, they can't challenge that decision? My question is, there's a distinction between what is filed under 184 and that's why, my Lord. My question is, if the Chief Justice, just one person, as a master of the roster, could decide whether to take a suo motu or not, why not a committee? Yes, and that is why my response was that further if providing guarantees, and my only question is, are we not accountable to the litigants? Absolutely. The Parliament is the representative of the litigants. If they want to change our procedure because they are not satisfied with our internal or institutional independence, that's their prerogative. And we are there to serve the litigants. And if I may, my Lord. Normally, you see, the cases would be marked by the Chief Justice, even if it's a 184(3). So I think the question of judicial power is secondary. First comes the constitution of the bench, and then judicial power is going to be exercised. Here we're talking about the constitution of the bench. It doesn't impair any judicial power. The question is, earlier the Chief Justice would mark the case to somebody. He would certainly mark it himself. I mean, I as a judge would not hear any case unless it's marked to me. And then all it says is that instead of the Chief Justice, the committee marks it. So judicial power is not in any way impeded, because judicial power comes after the bench. Section 3 talks about invoking of jurisdiction, and that is what I was addressing. Specifically states that the committee would examine. The word used is examine, and that's what I was addressing. For examination, if the committee is of the view that a question of public, this is exactly so it's a judicial power. Yes. So मैं So यही how कह रहा हूँ. can the committee on the administrative side exercise judicial power? मैं यही आपको कह रहा हूँ कि if you are minded to hold कि ये जो overlap हो गया है कि administrative function और judicial function को control कर रहा है, you would have to inevitably hold that going forward there will never be a suo motu exercise of powers, because that's exactly what the Chief Justice used to do.
They would first examine it and then constitute a bench. और यही वो tension थी जो आप paragraph 53, Please take 54 one में आपने question कहा from था. this side, AG sir. Oh, sorry. The Article 184 begins with the word Supreme Court. What does that mean? Supreme Court means all the judges or only the Chief Justice? It's what Article 176, your ladyship, says is the Chief Justice and the judges of the Supreme Court. 184 I'm talking about. जी, तो 184 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेशन जो है वो 176 से फ्लो करेगी. जी. 176 में सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस एंड ऑल द जजेस. All the judges. No single person Yes. is the Supreme Court. It's all of you who are the Supreme Court. So while exercising jurisdiction, अब ये हो सकता है कि आप ये कहें कि नहीं, ये सेक्शन 3 जो है ये इस तरह से नहीं होगा, इसको हम रीड डाउन करेंगे और कोई भी एक्सरसाइज सारी कोर्ट बैठेगी और वो पहले देखेंगे कि ये थ्रेशोल्ड मीट होता है या नहीं होता है, एंड देन you mean to say that committee that could be a fair outcome. Mr. Attorney General, the committee is constituted of 3 members to see whether the case do fall within the ambit of 184(3) or not. The litigant would be invited. इसमें in continuation, what remedy would be available to him, because this is an administrative order, we cannot be challenged in appeal except the chamber appeal under the rules. ये जो थ्रेशोल्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे डे इन डे आउट बेसिस पे हमें क्रॉस करना पड़ता है लिटिगेंट्स ऑन दिस साइड, जहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं रजिस्ट्रार के कि ये मीट नहीं. I'll tell you what's actually been happening. Number of petitions have come up, but the office has taken objection. Not the judge, the office. Yes. This is one very low. ठीक है, उन्होंने objection लगा दी, not they come to me saying absolutely ridiculous kind of petitions. ठीक है, they are dismissed in my chamber against an appeal response. The fact that we don't make available 184(3) does not mean we can't file a civil suit, does not mean we can't file an FIR, does not mean we can't go to 199, does not mean any other remedy. So this is done every day, we do it. Not 3 judges, 1 assistant registrar in the branch office says not maintainable, उसके खिलाफ अपील आती है. वो कितने लोग सुनते हैं? 1 जज. उसके खिलाफ से अपील है, उसकी एंडलेस है. ठीक है, यहाँ तो बल्कि वो भी जुर्म बढ़ गया है. जो आपने हमें वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पार मेरे दिए हैं, उसके पास होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास होना, लेकिन उसके पास निदेशक जो तक टाइमिंग कर लेगा वो कुछ नहीं होगा, 3 होगा. तो ये तो बल्कि ज्यादा उसको अहमियत नहीं जा रही है, rather than उसको वेट कर रहा है. तो नहीं होना चाहिए. राइट आपके सारे महफूज हैं, जो आइन देता है, जो कानून देता है. ये नहीं कि आपने 184(3) की पिटिशन डिस्मिस कर दी तो 99 में आप नहीं जा सकते हैं, या आप सूट नहीं फाइल कर सकते हैं. जो भी चीज़, यहाँ तो लोग अजीब अजीब चीज़ें की, मेरा उससे पैसे उधार हैं, वो जाके गवर्नमेंट डाल दिया, डिस्मिस कर दी, मेंटेनेबिलिटी भी किया, अपील है उसको डिस्मिस कर दिया. इवन दो जस्ट वेस्टेड अननेसेसरी टाइम. I don't know what are you taking away? That is the same question. What are you taking away? दो सिस्टम है. एक है कि जब कोई पिटिशन आती है, पिटिशन ऑफिस को उसको जाती है, रजिस्ट्रार ऑफिस को एग्जामिन whether it meets the threshold or not. In fact, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं मीट करता, and that's the end of the matter. You have been given to this committee, the 3 senior most Chief Justice and 2 senior most judges. You see, the power of registrar could be appealed in chamber, but in 3 members committee where the appeal lies. Which is the 3 judges, my lord. 3 judges. ये बात ठीक है कि उसमें ये बात हो सकती है कि जी उसकी कोई आपको जो है वो आगे हेयरिंग नहीं होगी, हेयरिंग नहीं होगी. मगर जी साहब आप ये बता देना कि अगर 2 जजेस या 3 जजेस बेंच चल रहा है, जैसे कि पुराना सिस्टम है, उसमें एक अगर 3 मेंबर समझते हैं कि दिस इज केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वो रेफर करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस इनकार कर जाता है कि तीनों से एग्री नहीं करता,
He has all the power, more power than 3 judges sitting in the court. The Chief Justice alone sitting in a chamber can undo this. And the suo motu particularly, उसमें तो और ज़्यादा फिर problematic है. Because उसमें तो खुद ही कर रहे हैं, वो खुद ही examine कर रहे हैं. 3 maybe the process is that if the committee thinks that it's a matter of 184(3), they'll mark it to a bench which is not less than 3. If they think it's not, they'll send it to a 2-member bench maybe, or wherever. It's not throwing out the list. And my lord, as my lord the Chief Justice has just observed, it is not that other than 184(3), the constitution of this country or the laws of this country do not provide any remedy. May I add to this? My lord. All that the committee will be doing, raising an objection. Yes. Objection to the effect, and that is for us internally to provide an appeal against that. My lords can suitably amend the rules. You see, again, the question is that since 1980 had not amended our rules, that is why the Parliament was forced to amend them. Had we amended them ourselves, because the bars were raising questions, the public was raising questions, the litigants were raising questions, we actually forced the Parliament to do it for us. And everyone, there's consensus that this is exactly, अब इस वक्त हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है, Parliament ना करती, आप कर लेते. But what when we are refusing to do that? And that is exactly what has happened. Being 43 years. And this act simply says that we've not been doing our job earlier. That is it. And it's saying we'll do it for you because you've been sleeping all these years. You were too polite to say that. My lord, we have section 4. I've read that. Section 5. अभी तक जवाब नहीं आया. जी, वो आपने जो बात कही कि जी अब फुल कोर्ट अगर बैठेगी तो उसमें उस राइट ऑफ अपील का क्या होगा? पहले क्वेश्चन तो ये है कि राइट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर कैसे आ सकती है जब 184(3) is a constitutional provision and it specifically it does not provide a right of appeal. Where the right of appeal was sought to be provided, it was provided specifically in the Constitution. So aren't you adding to the Constitution or amending the Constitution without an amended Mr. Attorney General, entry 55 says that we'll enhance your jurisdiction to एक और 84 की appeal बना दी है. तो 185 की भी फिर एक और अपील बन सकती है? बन सकती है. सेकंड अपील तो है, हमें वैसे भी बताया हुआ हमने कि Speaking for myself, Learned Attorney General, Learned Attorney, speaking for myself. Why not then a third appeal or a fourth appeal or a fifth appeal? Obviously, it's the Parliament. Parliament won't do absurd things, and no, of course, it's not a question of absurdity because this undercuts the review, the whole concept of review. The finality of judgments for res judicata is regarded as one of the most fundamental principles of the administration of justice. It surely does. Exception. No, अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तो फिर infinity हो गया. नहीं, infinity नहीं है. Obviously, you know, we're talking about the Parliament here. We're not talking about. आप बात फिर आ जाती है conjecture और theory और ये और वो बात principle की हो रही है. असूल समझने की है ना. एक दफा एक बात को concede कर दिया जाए, accept कर लिया जाए. In principle, then there is no limit. And therefore, if there is no limit, the question to my mind arises that therefore the power does not exist. Lord, this is the great point. respect. Again, a review jurisdiction भी है ना. अब review jurisdiction का क्या concept है कि Supreme Court में finality हो गई. अब आप maximum में review कर रहे हैं. With great respect, when it comes to even on this plane, and I submit that entry 55 sufficiently covers section 5. Can you go to the next point? I'll only add to this, Learned Attorney General, there's a distinction. Article 185 explicitly is for those judgments that are rendered by the lower courts. Here the appeal has been provided in 184(3), which is our original jurisdiction. And
It's only of a supplemental nature. It's a continuation of the same proceedings, the original jurisdiction. And, so I don't see how... And in a context where this court becomes the first and the final court in the same proceedings. Are you done? Are you done? My Lord, to this extent, and I'm just going to conclude my other two submissions here. I have placed on with my paper book the judgments of in Baz Mohammed Kakad case and the Punjab Provincial Cooperatives case. They are in volume 2, my Lord. My Lord, section 6 now, right to... there was one concern also expressed by Justice Aisha Malik, which was that if we follow this procedure, then when the full court meets, then the appeal goes away. एक ये भी point था, इसको आप कैसे address करेंगे? Because I mean, one answer could be कि if the wisdom of all is such है, तो फिर वो naturally सब लोगों ने सारे एंगल देखे होंगे. आप कैसे एड्रेस करना चाहते हैं? उसमें एक ये बात है, मैंने अपने रिटन सबमिशंस में ये कहा है कि आप इसको टू दैट एक्सटेंट रीड डाउन कर लेंगे. इस हद तक रीड डाउन करें जहाँ पे फुल कोर्ट होगी, नेचुरली अपील जो है वो लिमिटेड हो जाएगा. बट आप उसको ये कर सकते हैं. सॉरी सर, just I'm just saying, if you harmonize 4 and 5 in a situation where the whole full court is hearing it, the question of appeal does not arise. My Lord, ये अब 15 बैठे हुए, so मैं जैसी just will say, so if it was in original proceedings, it was a bench comprising of 7 lordships on this side, the appeal would have come before the remainder 8 judges, because it had to be a bench larger than the bench hearing the original appeal. In this case, we are before your lordships in original jurisdiction, full court. आप देखिए ना, इसमें ये जरूरी नहीं है कि one jumps from 5 member to full court. फर्ज करें अभी 15 जज हैं, ठीक है ना? फर्ज करें एक आर्टिकल 184(3) की जजमेंट वो पिटीशन आ जाती है, 9 member बेंच बन जाता है. फुल कोर्ट तो नहीं है. My lords would be mindful of this. अब ये हो सकता है आप कहते हैं यहाँ पे जी वो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, तो ये खराब और वो खराब और ये खराब. फर्ज करें 3 member कमेटी कहती है जी हम भी उसमें बैठ सकते हैं, हम राइट ऑफ अपील खत्म कर देते हैं, हम 9 member बेंच बना देते हैं. अब देखिए ना, आप इसको एड्रेस कीजिए ना. ये ऐसी बात नहीं है कि द विजडम ऑफ द फुल कोर्ट आ गई तो राइट ऑफ अपील तो खत्म हो गया. What I'm submitting is that now it's a duty cast हो गई है इस कमेटी के ऊपर. पर उसी तरह ड्यूटी पहले चीफ जस्टिस पर भी थी ना. नाउ यू पुटिंग द ड्यूटी ऑन द फुल कोर्ट, तो कोर्ट तो फिर अपनी मर्जी पर ही चल रही है ना. व्हेनेवर इट वांट्स टू डू समथिंग वो राइट ब्लॉक करना चाहेगी. What you are saying is that substantive right that you have created under the statute is again left to the mercy of the court. It will decide कि ये substantive right देनी है कि नहीं. तो फिर आपने ये right दी किस मकसद के लिए? 8 member bench बन जाए, 9 member bench बन जाए, right of appeal खत्म हो गया. So let me just I think what we can do is we can logically interpret the legislation. Now, for instance, when this case was first being heard, it was an 8-member bench. There were not enough judges, still aren't, to have heard an appeal, theoretically speaking. Yes. So, unless the bench, the very first day it sat, it decided to strike out this law. That's a different thing. But if it was sustainable, then how could an 8-member bench be constituted to begin with? Because that right of appeal was taken away from day one the bench sat. We are now worried about the right of appeal when there is a full court, but this question should have been raised against those, or when the bench was being constituted, that the law provides for a right of appeal. Here we are 8 of them. There aren't 9 of us available. So how that right of appeal has already gone away. We have decided an important component of this law. Before sitting in the courtroom, we have decided it. Is that correct? Yes. So when we are concerned now, we should have been concerned earlier too. So वो तो गई. Actually, जब वो CMS थी full court के लिए जब आर्ग्यू हो रही थी, तो उस वक्त ये सवाल बकायदा उठाया गया कि आप कह रहे हैं full court बनाई जाए, आपको तो कहना ही नहीं चाहिए कि full court बनाई जाए, आपको तो कहना चाहिए this matter should be heard by lesser number. वो CMS क्योंकि वो hearing पे नहीं गई, but
But the burden at the end of the day was on us. The question was in fact put by me. And so therefore it's not that the question was not there. My Lord, if I may briefly respond to it, followed by a response in writing. Let me add to this. Let me add. मेरे ख्याल से जो मैं गदर कर चुका हूँ और ऑर्डरशिप पढ़ने के बाद महसूस तो ये हो रहा है कि जब ये पिटीशन ली गई उस वक्त तो यकीनन बिल था, इट वाज नॉट थ्रू द पार्लियामेंट, एक्ट नहीं बना था, बनने से पहले सस्पेंड होता जो कि आज तक इनफील्ड नहीं है। अगर ये इनफील्ड होता तो शायद 8 मेंबर बेंच उस वक्त भी ना बनता। इसका मतलब ये कि हम एक्ट को मान रहे हैं। अगर हम बेंच पे एतराज करें इसका मतलब हम एक्ट को मान रहे हैं, और अगर एक्ट सस्पेंड है फिर तो अगर 8 मेंबर बन सकते, व्हाई नॉट फुल कोर्ट? So मैं इसका brief एक response दूँ and then followed by a detailed response in writing, briefly put, and that would perhaps address ladyship's question as well, but in subject to what we have to submit in writing. Going forward, if this act is upheld and is declared intra vires, the committee at all times would be mindful that there is a right of appeal, a substantive right, which will get obliterated if a bench beyond a certain number, given the numerical strength of the court at a particular time, is constituted. So therefore, that power, that administrative power exercised by the bench. Mr. Attorney General, इसका मतलब है पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया कि जी फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकती। in cases, in circumstances में ये हो सकता है, जैसे अभी भी है। प्रकाशन तो सोचिए आपकी बात की कि यही प्रिसाइसली सवाल है कि इस लॉ की इस सेक्शन की वजह से। So let me put it differently. Now फुल कोर्ट कभी बैठ ही नहीं सकती। नहीं, फुल कोर्ट आप बैठेंगे आर्टिकल 184 matters, questions which are the most important question that can ever be raised before the court. In exceptional circumstances, it might be so. But does that is that enough to just take away the right of appeal? Attorney General, the other way to look at it is that if the committee were to the view that the matter is so grave and so serious that a larger bench which will not provide for an appeal be made, either full court or any large bench, then that be so. I mean, that is how the committee will decide, looking at the issue. So it doesn't take away the power to constitute a larger bench or a full court, but at the same time, it will be saying that it's so important that a collective wisdom will prevail. So there is no, I mean, doesn't really, it can be easily It can be reconciled. My Lord, Section 6, right to appoint. Section 5 can be read down. My Lord, to that extent, my Lords can hold that in exceptional cases and when a situation this sort arises, it be so, my Lord. Right of appeal पे substantive right नहीं है, जो statute. Ladyship, look, we are faced with a situation here, and let me just be very candid now. We have had recording, we have had car case, and we have God knows what not. And all of that has happened under 184.3. With great respect. With great respect. And steel mill is a classic example. Steel mill was in profits at the time when all of that happened, as far as my information goes. It had 12 billion worth of raw material lying there. And now we are faced with an asset which is constantly bleeding. How many of those were full court? How many of those were full court judgments? My Lord, may not be. यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना. Not be. मैं ये कह रहा हूँ कि इसको reconcile किया जा सकता है. यही तो point है कि एक तरफ आप कह रहे हैं हम right of appeal दे रहे हैं in order to address precisely these kind of things. दूसरी तरफ कह रहे हैं चलो full court बन जाए तो बन जाए. Full court बन जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि there might be issues in time. आप kindly जरा थोड़ी सी. नहीं, there might be issues in time. Applications of your submission तो kindly देखिए. मैं उसको ये इस तरह से आपको कहता हूँ कि Attorney General साहब, let's be, we are all grown-ups, right? Attorney General साहब, can I just, the problem arose, I think thousands of articles have been written, lawyers have spoken about it. We keep talking about the two chariots, but let's place some emphasis on the lawyers also say. There has been allegations, and I can deny it, but it doesn't. Public opinion thinks that 184.3 has been misused, jurisdiction has been exceeded. Okay? So what you are saying is, first of all, we did not create the mess. You created the mess. We are trying to solve your mess. What did we do? 3-member bench judgment, 184.3, final judgment. Nothing can be done.
Now we are concerned about full courts only. What about the three-member bench judgment? It was a three-member bench judgment which did Rekudik. It was not a full court or even a large bench. A three-member bench is the normal, smallest bench in the Supreme Court. So what could you do? Nothing. Now you come in advisory jurisdiction. We have to kind of find ways and means because it's the interest of the country at stake. I would rather surrender my high status and place it at the feet of the taxpayer public of Pakistan rather than give them a whopping liability of $6.5 billion because the independence of the judiciary, they'll say, what are you talking about independence of judiciary? Independence of Pakistan will disappear if you labor this much of debt on Pakistan, 6.5 billion. It's not easy. We don't understand the repercussion of things. Fine. I'm not saying that judges who decided that they did what they thought at the time, how they were assisted according to their conscience correctly in their minds. Yes, but we make mistakes. Suppose I was a member of this bench. I would love this thing if it came to my mind, repercussions. Okay, now there's a right of appeal. I can undo. Review jurisdiction, you know what the review jurisdiction is. Take the case of Zulfikar Ali Bhutto. Yes. Supreme Court split. Review unanimous because the scope of review is very different creature. It is error floating on the record, so they didn't even go there. That could not be rectified through review. You had to create 184.3. If आपको simple बोलना चाहिए, अगर आप अपने इतने ज़्यादा काम ना करें, थोड़े हदूद में रहें, शायद हमें इस legislation की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. हमने भी तो थोड़ी गलतियां कर ली. हमें देखिए हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, अन्ना बहुत बड़ी बन गई है और तकब्बुर. हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं. मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है. हमने ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है. अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है. अगर जजमेंट लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया. मैं नहीं मानूंगा इसको क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है. The minute I say that, please file a reference against me that I'm violating my oath of office if I say even this. I will endorse these subsequent acts. तो हमें मुल्क का भी तो सोचना चाहिए. हमें अपनी सिर्फ अपनी अना और आपको अना और इन ख्वाजा साहब मुझे नहीं पता उनको क्या मसला हो रहा है, उनको हमारा फिगर पड़िए. हम स्यूमोटो हर जगह करते हैं, हमने यहाँ क्यों नहीं स्यूमोटो किया? Why are we waiting for him to bring an act? 10 petitions आ गई, पब्लिक में से तो कोई नहीं आ रहा है. पता क्या मसला है लोगों का? उनके तो कोई मसले नहीं. वो कहते हैं हमारा केस चला के खत्म कर लें. Sorry, I'm diverging, but we have to see the larger picture also. We have to see work within the constitution where every citizen gets his due. What are we doing? What are we taking away from him? Focus on that. Nothing, my lord. And section 6, my lord. इसमें Attorney General साहब, law reforms ordinance के तहत there's a right of appeal. लेकिन कई cases में, depending on the issues, the high courts constitute larger benches, and therefore that right of appeal is not available. लेकिन जहाँ तक देखें ना, जो अभी बात हुई है, 184.3 is discretionary. Now, यहाँ पे जितनी बात हुई है, even the petitioners, their counsels, they all agree that this law is in the interest of the litigants. It actually enhances access to justice. So why shouldn't we just not exercise our jurisdiction? Because in exercising jurisdiction, we will be going against the interests of the litigants. Why should we go against the rights of the litigants? It is in their interest and in their favor. एक प्रॉब्लम अभी जो अपील के बारे में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज आंसर टू इट. सपोज आज हम 15 बैठे हैं, कल 2 वैकेंसीज है वो भी फिलअप होती है, 17 के 17 बैठते हैं. इशू यहाँ पे ये कि अपील की रेमेडी नहीं हो, इस एक्ट के तहत अवेलेबल नहीं हो. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 181 में, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो a judge from the High Court can be asked to act temporarily as judge of the Supreme Court. तो वो आपका एक्ट कहता है कि larger bench will hear the appeal. So add one judge. This is larger bench. Appeal is there. No problem. I think problem is solved by the Constitution. The remaining judges would be the same. Yes, of course.
फैसला तो वही आएगा. This was just like review. आपने conclude कर लिए. My lord, I just now the section, as far as section 7 is concerned, I've already submitted. I think this provision surely addresses the concerns of the litigants, fixation of cases under section 7. Provision of intra-court appeal, that is to be seen. Intra-court appeal जो आपकी है, उसको देखना है. इधर सिर्फ प्रॉब्लम ये जो आपने रिट्रोस्पेक्टिविटी दी है इस लॉ को, उससे हमारी पेंडेंसी और ज्यादा नहीं हो जाएगी. My lord, at one end, now my lord would have to see देखिए हम सारी बात चलें ठीक है मान लेते हैं जी, आप इंटरेस्ट कर रहे हैं उधर आप उसको रिट्रोस्पेक्टिव, अब आप सोचिए 185(3) का और आप इस तारीख से दे रहे हैं, यू गोइंग बैक अप, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू देन? वी द होल विल बी गटेड. How many cases would there be, my lord? And no limitation period is here. ये तो आप ना करें ना. My lord, ये थोड़ा I think what has been what the parliament has, चलो ठीक है. my lord, what the parliament has tried to address here is. So you see, it is very open-ended. Prior to the commencement of this act, so it will go to 1947. जितने 185, 73 से शुरू हो जाएंगे. My lord, 1947 तो नहीं, 75 में पहला हुआ था. एक बात है, अब इसमें case open-ended ना. And then you have fixed a limitation of 30 days for filing appeal prior to commencement of this act. Means all previous decisions, all persons can come to this court within 30 days after the sustaining the. I think 30 days have expired. I don't know how many came actually. ये बताइए अटॉर्नी जनरल साहब, जरा ये मालूम करें दफ्तर से कि इस इनैक्टमेंट के बाद अपील कितनी फाइल हुई है इस प्रोविजन के तहत? वैसे नहीं हुई होगी because the law was सस्पेंडेड. ओके couldn't have taken effect. फिर एक और छूट जाएगा ना. ये बताइए जितनी दफा इस कोर्ट ने मार्शल लॉज को और डिक्टेटर्स को वैलिडेट किया है, कैन द पीपल ऑफ दिस कंट्री फाइल अपील्स एंड have those judgments annulled? Why not? I would hope so. I think this is our accountability. Let us be open about it. Why do we fear if it's... Otherwise we'll be brushing things under the mat. 1975, Manzoor Alai was the first case under 184(3), and thereafter, after 13 years, it was Benazir Bhutto case, 1988. ज़्यादा जो jurisdiction exercise हुई है वो perhaps पिछले 15 साल में हुई है. Where do you draw the line? I mean, the question is, if there is transparency, then let it be. Why brush something under the mat and look into some? Why? My lord, let's undo Federal Shariat Court Maulvi Tamizuddin Khan case. Effectively, it won't mean anything, but maybe it will look good. I don't know, because everybody's dead or whatever, long past, gone. My lord, I would conclude my submissions with this. I have the written submissions along with reliances. I have noted down one question, जिसका detail ये section 6 पे भी बता दीजिए, Learned Attorney General, ये जो आपका right to counsel. Yes, because it is already covered under Article 188 of the Constitution. उसमें Order 26 power of the review. जी, Order 26. So you have said that the party shall have the right to appoint counsel of its own choice. पहले जरा my lord का 188 पढ़ लें जो refer कर रहे हैं. 188 is the Supreme Court shall पढ़ लें जरा. have power subject to the provisions of any act of Parliament and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it. Yes. So this power under the power of review. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है. तारीख में पहली बार फुल कोर्ट की समाअत पीटीवी न्यूज और पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त नशर. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 5 रोजा दौरा अमरीका. न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे. अनवारुल हक काकड़ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अहम कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे. बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से मुलाकातें और मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स का दौरा भी शेड्यूल का हिस्सा.
मुल्क भर में बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। तकसीमकार कंपनीज की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। मैप्को रीजन में बिजली चोरी के मजीद 136 कनेक्शंस पकड़े गए। केस्को टीमों की जानिब से भी भरपूर ऑपरेशन। 42 नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता। 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गैपको रीजन में 611 बिजली चोर पकड़े गए। 4 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना। 503 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशें। अवाम का निगरान हुकूमत और पाक फौज की कार्रवाइयों का खैर मकदम। चीनी की स्मगलिंग और डॉलर माफिया के खिलाफ किए गए इकदाम से कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए, अवामी राय। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 30 पैसे मजीद सस्ता। कीमत 295 रुपए 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 294 और कीमत फरोख्त 297 रुपए है। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदी कमेटीज के काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। कमेटीज को हर सूरत 26 सितंबर 2023 तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात को मुमकिन बनाया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर तश्कील। जदीद तकाजों पर मबनी सेंटर में पहली बार व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने का फैसला। इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के विजन के मुताबिक डिजिटलाइज किया गया है। इंतखाबात के अलावा इंतखाबी मुहिम समेत हर इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग की जाएगी। इंटरनेट से मुतालिक मसाइल वाले इलाके भी अलग हिकमत अमली बनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन हुकाम की सहाफियों को ब्रीफिंग। और एशिया कप के फाइनल में ना पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गया। जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त ने ऑस्ट्रेलिया को 30 नंबर पर भेज दिया। भारत की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं नाज़िया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जारी है। आइए आपको लाइव लिए चलते हैं। Am I bound by the Supreme Court rules, or rules are in aid of administration of justice, and rules bind the council and the litigants but does not bind the court? What is your position on that? Am I bound to follow the rules of 1980? I mean, like for instance, Order 33 says I can condone delay, I can do various things. So it is there to be followed by litigants and counsel, but there may be cases of extreme injustice where we may overlook. For instance, in criminal matters, we rarely even ever dismiss things on grounds of limitation, though it is provided it has to be filed within a certain period of time, because the liberties of the subject, we haven't given a decision on it. So, but I think rules are really to show us, guide us, not to bind us. Actually, rules acknowledge this. Order 33 Rule 6 actually says so. That, overall it says that the rules shall, nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the court. At the end of the day, it's not so important, significant document. My lord. It is practice and procedure. These are all. वो भी हमने Order 47 को connect कर दिया civil proceedings, civil procedures court के साथ. So these are not, I mean, these are not like ironclad things, but we cannot, we'll see where the justice of the cause lies, and of course, it doesn't mean they're totally irrelevant, so we will see when it's appropriate. It may be a good case, it may be a bad case, I don't know. So, are you conclude या कुछ और रह गया? My lord, I have concluded. Attorney General, if I may ask a question, Well, if you are not bound by the Supreme Court rules in terms of whatever the Supreme Court rules say, but we are bound by Act of Parliament in regard to our own practice and procedure, do you think that is a constitutionally viable position? my lord, Then if these rules are made by the full court on the administrative side, and any particular bench can say, well, goodbye to the rules, why shouldn't that bench have the right to say goodbye to the act? My lord, my response to that would be that both the preamble, from which we draw those salient features. No, I think the thing is the that independence when the Supreme Court is sitting as a court of law, what is it bound by? If it's not even bound by its own rules,
Why should we be bound by Act of Parliament? Lord, the rules say that particular bench can say, well, we don't recognize section, what is it, section 6. And another bench can say, well, we recognize section 6. Lord, I mean, why should not your, this law that you're defending, I think not that be put in the same category vis-a-vis our own rules? If we are not bound by one, why should we be bound by the other? As I view it, I think priority number 1 is constitution. Number 2 in scale of importance is law. Number 3 is rules. Then come regulations, then come notifications, then come whatever you want to, instructions. So this is, in my mind, I go by that approach. I may be wrong. Well, Lord, the rules, actually, Rule 6 of Order 33 itself. I think the Constitution actually abuse of process नहीं होगी, ends of justice को meet करने के लिए you're not bound by. Attorney General, the rules actually come out of the Constitution, and Constitution says the court has to be regulated. So I think that, in my opinion, certainly the rules regulate the affairs and we bound by them. And they might be in the trajectory starting with the Constitution, law and the rules, but all of them are binding, and that's how the system works. And my lords would also acknowledge that this is not a case where Article 199 per se has been challenged on the basis of it being violative of salient features for that matter. Of course, even if that was so, both 191 and the preamble from which the salient features flow were enacted at the same time. It is not a subsequent amendment where relying upon Kesavananda Bharti or DBA Rawalpindi matter could have proceeded. So when the preamble, when the Constitution was being made, 199 has not undergone any amendment ever since. So therefore, my lords, my respectful submission would be that this act, my lord, we declared constitutional and the petitions be rejected to that effect, and nothing in this act in any way undermines the independence of judiciary, or nor has any externality been introduced where any other organ of the state or branch of government has been given any role whatsoever. Hopefully these are your final words. Hopefully. I'm going to answer. My lord. आपने कंक्लूड तो कर लिया, बस एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर फर्ज करिए कभी इसको हम अल्ट्रावायलेंस डिक्लेयर कर देते तो बात खत्म हो, लेकिन अगर इसको हम कहते हैं कि वैलिड लॉ है, वैलिड लॉ हो जाएगा वहां से जब ये बना था, इन बिटवीन जो फैसले हुए हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ दोज डिसीजंस? अगर वैलिड करते हैं तो फ्रॉम दैट डेट होगा, तो फिर क्या होगा इसके बारे में आप बता दें. They become past and closed transactions in several instances in the past where a similar situation or a situation arisen where legal position had changed, but cases were decided or transactions had happened. The courts protected those under past and closed transactions, so that would be the effect to matters which could decide. Can the committee not retrospectively, suppose if the law is sustained, can the committee not retrospectively grant permission? The bench was constituted, assumed as if by consent. Let's put it like that. I don't know if that's possible or not. Cases which stand decided, they stand decided. अगर हम ये भी कर दें कि अगर कोई बहुत ही ऐसा unusual case आ जाए, I don't know. My lord, I don't know where the line would be drawn, but in so far as I think जी मैं इसको भी एड्रेस कर दूंगा. ड्यूरिंग द पीरियड की बात हो रही है ना, जो केस इस दौरान जो हुए फैसले हो गए, उनका क्या बनेगा? So जो केसेस लिस्ट अब पेंडिंग ही नहीं है और वो डिसाइड हो गए हैं केसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसको अब आपको देखना होगा कि उसको आप पास्ट एंड क्लोज में प्रोटेक्ट करते हैं जो फैसले हो गए. इतना पास्ट नहीं हुआ, अभी कई बात है वो. I think that is something that my lord would have to see if my lord wish to protect them. Thinks of all the angles. That is possibility. So this is a possibility. We're just airing it. We don't know the answer. उसमें दो चीजें हो सकती हैं. एक तो डिफेक्टिव डॉक्ट्राइन को हम देख सकते हैं, दूसरा राइट ऑफ अपील प्रोवाइड हो जाएगी. So they can, जिनके as far as 184(3) is concerned उसकी होगी, जिनकी नहीं थी 184(3) वो तो सिर्फ बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन तक रह जाएगी बात. उसमें आप देख सकते हैं कि वो तो जुडिशियल. It won't be a classic. देखिए दो किस्म के होते हैं, एक होता है क्लासिक quorum non judice
ठीक है, this won't fall in that category. It will be simply a procedural lapse. Whether a procedural lapse will affect the outcome. I got the cases which stand. I don't know. I mean, if I may be. क्योंकि एक तो होता है ना substantive right किसी की गई, बोले आपका क्या right किया? वो decide हो गए cases वो past and close. नहीं, past and close का लफ्ज क्या अगर हम कहें, देखिए एक होती है जो substantive right has been taken away. भाई okay, these three didn't hear it, those three heard it. आपको क्या फर्क पड़ रहा है इससे? Are you with me? So I'm just thinking aloud. Understood. So it does not, let's say, there's no, it's substantially कोई offend नहीं किया किसी right को, कोई, it was a matter of procedure. और अगर कोई जैसे कहा कि कोई बहुत ही चीज हो गई ऐसे, वो review तो पढ़ा हुआ है फिर भी, और ये अपील पड़ी हुई है 184 में. Yeah. And in any event, it was a bench comprising of your lordship. No, we don't want to kind of create a situation where things don't function. So भाई वो उसको क्या पड़ेगा? चलिए आपने मेरा अदालत में सुन लिया या सरदार साहब की अदालत में सुन लिया, कोर्ट तो थी ना, वो तो गलत criminal justice होता है ना, गलत अदालत अब चलेगा या उसके पास इख्तियार ही नहीं था to begin with. हमारे पास इख्तियार तो था, बस सिर्फ एक practical procedural matter that would be really for us, not for the litigant. उसको क्या पड़ना है? No, I would say, my lord, and that I think to that extent. I don't think that it will affect the decided cases. It has become past and close. I think that's the only fair conclusion that we can arrive at. Insofar as we're just going to take a short break. Let Khwaja Saab and others, and any other from the petitioner side. I see Mr. Bandari. You are for the petitioner or the? Your lordships had put various political. No, who are you for? I am for PTI. Which side of the divide? I'm supporting the petitioners, but I am also not saying that Article 191 is completely outs the powers of the Parliament. I would really like to hear you. Anyone else from this side? Petitioner. तो अगर आप लोग articulate जरा कर लें, we'll take a short break. My lord, I have actually filed my written submissions. नहीं, अगर why are you depriving us the pleasure of hearing you? Unless you want to deprive us, that's fine. No, not at all, my lord. I'm here. चौधरी साहब भी हैं. तो and of course we won't rush it. आप अपने जवाब भी दे दीजिएगा जो आप देना चाहते हैं. And we'll just come after. We just take a short. I think prayer time is also there. Short break, huh? And if I may be granted leave, I have to. As long as you leave somebody here who knows all the things, and then, if required, submit the. If you think, if you want to, we can't force you to submit a reply. But it may be in your interest to do so. Mr. Attorney General, best wishes from all of us on the assignment they want. It's in the national interest, and it's very important for Pakistan. So our best wishes. My lord, I hope you are well prepared. आपने 22 questions मुझसे पूछे हैं जी. You asked me. आते हैं वापस आते हैं. नहीं, 22 question में you like me to ask you to answer now, or you want me to give me some time to? नहीं, हम जरा वापस आ जाते हैं, फिर आपको कुछ सुनते हैं. अगर कोई बहुत ही पेचीदा सवाल हुआ, फिर हम देखते हैं. पेचीदा सवाल तो सारे ही हैं. But देखिए, petitioner always comes prepared of all the questions कि ये सारे आ सकते हैं. तो वो देखें, other side can say that, but you can't. You're the petitioner. May I say something? जी. देखिए ख्वाजा साहब जरा बात समझने की कोशिश करें ना. The functioning of the Supreme Court has ground stand still. I don't want that to continue. मुझे आप इजाजत दीजिए. ठीक है. मैं ये 22 सवाल जो हैं, मैं इनका जवाब लिख के आपको दे देता हूँ. चलिए, आप हम वापस तो आ जाए. इनको तो सुनेंगे ना बंदारी साहब को. शायद आप मुतमईन नहीं हैं. ये ऐसी जबरदस्त बात करें आप. बंदारी साहब को जो है मेरे पास आ चुका है जी. मुझे आप इजाजत इतनी दीजिए. देते हैं, वापस आके देते हैं. देखते सुने तो कुछ थोड़ी बात. देखना तो ये है ना कि पार्टीज क्या कहती हैं, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी चाहती हैं या नहीं चाहती. सुनकर मौखिक हमने नहीं सुना अभी तक. थैंक यू. यू कैन गो एंड लीव समवन हियर कॉम्पिटेंट. हाँ, थैंक यू. नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी. तसव्वुर तक नहीं. ये क्या बात हुई कि चीफ अपने पास दरखास्त रखे रहे और बेंच ना बनाए. ये कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है. दीगर खबरें शामिल करेंगे. मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का ग्रैंड मुशावरती इजलास हुआ है. इस इजलास में कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है. मरियम नवाज ने इजलास को कायद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी है.
मरीम नवाज ने कहा कि अवाम 31 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को दफन कर देंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि कौम को पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर के बाद महंगाई क्यों हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म ना होती तो महंगाई ख़त्म हो चुकी होती। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ सी पैक और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के खिलाफ भी साजिश हुई थी। एंटी करप्शन पंजाब ने सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मतन के मुताबिक परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM के तौर पर किसी स्पेशल सर्विसेज के ऑफिसर को नहीं लगाया जा सकता। परवेज इलाही ने माली वायदे के लिए मोहम्मद खान भट्टी को स्पेशल सेक्रेटरी लगाया। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही की 12 से ज़ायद मरतबा जमानत और गिरफ्तारी अदालती अहकामात का खुला मजाक और काबिल मुजम्मत है। अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हकीकत तो यह है कि अगर वो आज सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनकी और दीगर लोगों की तमाम तर मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। सियासतदानों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने की न पहले अच्छे नताइज निकले और न मुस्तकबिल में निकलेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। जियो न्यूज हाफ आवर्ली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय। अभी अपने करीबी रिटेलर या माय टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाओ। अब सिर्फ 200 रुपए में टेलीनॉर 4G मंथली टीम प्ले ऑफर से मिले 15 GB डेटा फॉर फेसबुक एंड व्हाट्सएप। अभी अपने करीबी रिटेलर या माय टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाओ। हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट। बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए। इसका विटामिन E लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप चिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। Geo News updates are brought to you by the best and most nutritious chicken, Harba, Sabroso. When it's loved, it's packed. मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मकामी होटल में नून लीग पंजाब का मुशावरती इजलास। मरीम नवाज ने कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। और साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं कि परवेज इलाही की 12 से ज़ायद मरतबा जमानत और गिरफ्तारी अदालती अहकामात का खुला मजाक और काबिल मजम्मत है। अगर वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनकी और दीगर लोगों की तमाम तर मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. जो किचन में खड़े खड़े पूरे घर का चक्कर लगा ले, उस माँ के लिए स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। Smart lifestyle. AC/DC inverter fans. Permanent magnet motor से 50% बिजली बचेगी। बड़े ख्वाबों को दरकार है ISAT यूनिवर्सिटी गुजरावाला। ADP और BS प्रोग्राम्स में दाखिले जारी है। मज़ीद मालूमात के लिए www.ii Can we request you that on the next date of hearing, if you can come here to Islamabad? Mr. Vardhan. आप किसके लिए हैं?
I am in Constitution petition number 18. आप कहाँ से हैं? लाहौर से. अच्छा नहीं, आप थोड़ी जहमत कीजिए, आप इस्लामाबाद आइए, ठीक है? क्योंकि ये तो ज्यादा क्वेटा और कराची के लिए, इस्लामाबाद इज वेरी 3-4 घंटे का ड्राइव है, ये आप आइए, मजा नहीं आता है। अच्छा, ये अगर आप लोग देखें, हमने कोशिश की कि इसको खत्म करें, मगर लग रहा है आज मुमकिन नहीं है। और आपकी भी वैलिड बात है कि बहुत सारे सवाल उठे, आप उनका जवाब देना चाहें, फेयर इनफ। इसलिए मैं आपको कह रहा था फौरन जवाब ना दें, जैसे वो आपके साथ ही दे रहे थे, मैंने कहा फंस जाएंगे, आप सोच समझ के जवाब दें। तो वो एक जगह फंस भी गए, तो वो तसल्ली से आप जवाब दे दें। अब हम ये करते हैं कि इसमें मेरी जो जाती तौर पर थी कि जी एक कानून है और वो कह रहा है कि मैं 2 लोगों से मशावरत करूं, ठीक है, वो मेरे सामने आ रहा था। अब मैंने ड्यूरिंग द इंटरवल अपने दोनों साथियों से ऑन माय राइट एंड माय लेफ्ट, तो उन्होंने कहा कि जी आप हमसे मशावरत कर लें, कोई ये तो ममानत वैसे भी नहीं देता है, अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो आप अग्री करते हैं? आप अग्री करते हैं? ठीक है, तो हम ये करेंगे, फिर हम इसको पार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो फिर वो अटॉर्नी जनरल भी आ जाएंगे, क्योंकि आज आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन स्ट्रेस्ड थिंकिंग ऑफ मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स। आप भी मजीद जितने सवालात उठे हैं आप उनके भी जवाब दे दीजिए। तो अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आज का ऑर्डर हम डिक्टेट कर देते हैं आपके सामने, लिखिए कौन है। We've heard the learned counsel. We partly heard the learned counsel for the petitioners in civil petition petition number 8. कौन से हैं आपके? 6, 7 and 10. 6, 7 and 10. 12 sir. Sorry, 12. 6, 7 and 12. आप किस में हैं सिद्दीकी साहब? 6, 7 and 12. ठीक है, दोनों कवर हो गए। We've also heard the learned Attorney General for Pakistan stated that he has to attend to a very important meeting in Vienna regarding the Inter-Water Treaty, and requested that he may be heard, after which we allowed, but he wanted more time, and a number of queries were also addressed by the bench and the learned counsel for the petitioners, namely Khwaja Sahab and Mr. Faisal Siddiqui, Imtiaz Siddiqui, requested to submit legal responses, legal replies thereto. The Attorney General was also asked questions, and he too sought time to submit legal replies to the queries raised by the bench. Full stop. अब आप अगला पैराग्राफ लिख दें। 2 इसमें मेरा लिख दें। कैसे लिख ठीक है, अब मैं अपना लिख देता हूँ। The Chief Justice stated that in view of the challenge thrown to the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, and as the matter is pending adjudication, he will be consulting with his 2 senior colleagues with regard to the constitution of benches. Honorable Senior Puny Judge Justice Sadar Tariq Masood agrees, and so too Justice Ijazul Ehsan. ठीक है, तो ये हम अपने तौर पे करेंगे, और अब आप डेट प्रपोज कर दें। सर, आपने जो अपने तौर पे किया है, एग्जैक्टली मैं ही ये कह रहा था, आप अपने तौर पे ये कर लीजिए। कर लेंगे ना, ये तो मैं चाहता था, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। हजूर, हम आपके सब चीजें खुली अदालत में होना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हुई पता होना चाहिए। और जो मेरे बहुत ही मोहतरम आप बता दें डेट, उनकी जो बातें हैं
ये वापसी कब है उनकी, कुछ पता है आपको? My lord, he will be back on Sunday जी. He will be arriving. अक्टूबर में कोई डेट रख लें? जी रख लें. 2 अक्टूबर क्या बनती है? ठीक है, 2 काफी आपको टाइम मिलेगा, आपसे ज्यादा टाइम मिलेगा. Adjourn to 2 अक्टूबर, मगर वो हमें पहले से दे दें. The replies, if any, that are to be filed should be filed by कब सर? ठीक है, जो भी करना चाहे. वीक बिफोर द डेट्स. नहीं, हम डेट देख लेते हैं ना, अभी कौन सा महीना? 25 कर दीजिए. हाँ, 25 सितंबर. आज क्या? आज 18 है जी. 18 है. ठीक है, 25 ठीक है. 25 जैसे आप ठीक है, तो आपसे तो हफ्ता दे दिया आपने, 2 दिन मांगे थे आपने. बहुत ठीक है, बता रही. जी, that's fine जी. That's fine with me. In fact, if your lordship can just note, I have already filed my concise statement. No, if you don't want to, don't file anything more. I've already filed. I'll supplement that. If you want to. In order to try and if you want to. It's not a mandatory. You've also heard the questions. If you have a better reply, maybe you come up with a better reply. ठीक है. So, अच्छा, इसमें लिख दें, all parties oblique council may file replies. Already order हुआ है जी पहले. हुआ है. May additional reply. May avail of the adjournment to file replies by 25th, by or before 25th September 2023. ठीक है. So now it will be adjourned. अच्छा, next date पे हम adjourn करेंगे. We'll give a full date of this hearing then. You know, थोड़े करें, बात सुनें. Or we'll decide it amongst ourselves, the 3 of us. Okay. ठीक है. ठीक है. Thank you very much. हाँ, अच्छा, शुरू में वो लिख दें, वो जो आपकी CMA हमने कुछ तो अलाउ भी कर दी, वो फुल कोर्ट हो गया ना. एक सेकंड. CMA 4207 कितने? पाकिस्तान बार काउंसिल की CMA 2023. एक सेकंड. और ठीक है, ये आपकी है ना पाकिस्तान बार? अच्छा, और दूसरी है CMA 3163, नहीं 31, एक सेकंड. हाँ, 31 CMA 3166 2023 and CMA 3199 2023. ये शुरू में लिख दीजिएगा. Through these applications, request for full court was made. However, the full court has been constituted. The learned counsel for the petitioners have no objection to the constitution of the full court. The application disposed of as allowed. ठीक है? नहीं, ठीक है. Any problems? No problem, sir. We are grateful. I'm very grateful that जो मैं चाहता था वो आपने पहले कर दिया, और जो वो मेरे दोस्त चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला वो आपने कर दिया है. बाकी काम जो रीडिंग डाउन का सेक्शन 3 और 4 है, इंशाअल्लाह मैं आपको करने. अच्छा, ये भी देख लेना. देखें, अगर आप कुछ इसको बचा सकते हैं, अगर एक तो होता है ना, आप रिजिड पोजीशन ले लें कि मैं किसी सूरत में. इतना जरूर कहूंगा जी, एक ऑर्डर था. नहीं, आप उसको देख लीजिए, अभी ना करें. मेरी एक सुन लीजिए गुजारिश. जी जरूर. जो हम 24 करोड़ अवाम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इतना मुतफिक हूँ कोई इंसान है. आई हैव बीन अ मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स माई सेल्फ वे बैक इन 1988. एट दैट टाइम आई हैड द बर्डन ऑफ अ मार्शल लॉ व्हिच हैड जस्ट बीन लिफ्टेड, एंड आई न्यू दैट. आई ओनली से दिस थिंग दैट देयर वाज एन ऑर्डर कि जो प्रोसीडिंग हुई है एंड हाउ मेनी मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द वोटिंग ऑफ दिस बिल, अगर वो प्रोसीडिंग्स आपके सामने आ जाए तो मेरा काम कुछ 24 करोड़ से शायद 2 करोड़ पे आ जाएगा. आपने हमें 2-3 प्रोविजन वो मंगवा दी. नहीं, आपने 2-3 प्रोविजन, ये आपका आर्गुमेंट को कमजोर इसलिए कर देगा क्योंकि आपने कहा कि ये आप काम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं. अब हम उनके काम देख रहे हैं, आपने कहा जो हमें नहीं करना चाहिए. ये डिस्पेल करना चाहिए. ये मगर आपका आर्गुमेंट कमजोर हो जाएगा. मैं सर ये डिस्पेल करना चाहता हूँ कि आपके मैं आर्गुमेंट से मुत्तफिक हूँ कि 24 करोड़ आवाम का ख्याल रखना चाहिए. नहीं, इसीलिए अगर मैं उसको बढ़ाऊं, इसीलिए बेंचेस. अच्छा, अब सॉरी, आई नो इट्स वेरी लेट. आई वुड रिक्वेस्ट माई लर्नेड कलीग्स, अभी हम कर रहे नहीं कि ऐसे बेंचेस लगाएंगे जिसमें इस्लामाबाद एक वकील हो.
और छोटे केसेस हों जो कि क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे होंगे ना, अब कल बेंचेस बनेंगी, ठीक है। थैंक यू सर, ठीक है। ऐसे ख्वाजा साहब आप राइट, ख्वाजा साहब आप आर्टिकल 69 पढ़ ले, वो आपका जवाब मिल जाएगा। एक्चुअली मैं आपको नहीं, एक सेकंड, सिर्फ आप लोग बुरा ना माने, आई वुड लव टू हियर इट, बट अब देखिए वक्त है, बहुत केसेस हैं, तो प्रिसाइज जितना हो सके हम आपको 2 के बजाय 3 कर रहे हैं डेट, क्योंकि वो 3 अक्टूबर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, वो डेट बदल दीजिए, ट्यूसडे। यस, ये तो ख्वाजा साहब ने बात की, एक्चुअली आपने ऑर्डर एक फरमाया हुआ है, अटॉर्नी जनरल साहब को डायरेक्शन दी हुई है, रिकॉर्ड है वो पार्लियामेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, वो पेश किया जाए, जो अभी तक अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हैड नॉट बीन प्रोड्यूस्ड। अच्छा, मैं एक चीज आपको सिर्फ बता दूं, देखें हमें एक दूसरे की कदर करना चाहिए। कैन आई गो एंड पीप इनटू योर फाइल? नो सर, दिस इज नॉट द केस। एक सेकंड है, ये ना, देखिए, कैन आई गो एंड टू पीप इनटू योर फाइल? You will say it's privileged communication between me and my client, ठीक है? Can I ask you how much your client has paid you? ठीक है, this is also privileged, ठहर जाइए ना। तो अब अटॉर्नी जनरल की कौन सा पावर इस्तेमाल करेंगे टू डू दिस? मतलब इस चीजों में फंस जाएंगे। अदालत का अदालत का अगर ऑर्डर है तो वो कर देंगे कंप्लाई, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। अदालत का ऑर्डर है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, एक बात वजाहत कर दी वर्दक साहब, आपको यहाँ आना होगा, लाहौर से बैठ के आप वीडियो लिंक नहीं देंगे आपको। जी बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, आपके साथी को भी बता दीजिए, ठीक है? वी नोटेड सर। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की फुल कोर्ट समाअत मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ये समाअत पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। 3 अक्टूबर मंगल को इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है 3 अक्टूबर तक के लिए, जिस दौरान फ्रीकैन को अपने जवाबात जमा करवाने के लिए, इजाफी जवाबात जमा करवाने के लिए वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और आपको बताते चलें कि 25 सितंबर तक अपने जवाब जमा करवा सकते हैं, जबकि इस केस की आइंदा समाअत 3 अक्टूबर 2023 को होगी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट समाअत कर रहा था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के हवाले से, जिसमें 9 दरखास्तें दायर की गई थी। दरखास्त गुजारों से दलाइल मांगे गए और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। अब यह समाअत 2023 अक्टूबर 3 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीटीवी न्यूज से अब तक के लिए ये थी ताजा तरीन। नहीं हो रहा, चले हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान की सतह पे अफगानिस्तान को कुछ शिकायतें होंगी, लेकिन आलमी बिरादरी भी जो यक जुबान हो कि ये मुतालबा अबूरी हुकूमत से कर रही है कि क़याम अमन और इंसानी हुकूक के हवाले से किरदार अदा किया जाए, तो कुछ तो है जो कमियां है अफगान अबूरी हुकूमत को, जिस पे उन्हें तवज्जो देनी होगी और दुनिया को मुतमईन करना होगा। सही है, बिल्कुल दुरुस्त। वक्त जरा कम है, हाफिज साहब मैं आपको